In this question, we have to find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. So let's start with part number 1, right? Question number 1. So Py is equal to, what is given here? Py is equal to y square minus y plus 1, right? We have to find out the value of P0, right? हमें P0 को वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट मींस we have to find out the value of the polynomial py at y is equal to 0, right? It means इस हमारे पास जो ये polynomial given है, हमें इसमें y के प्लेस पर 0 को पुट करना पड़ेगा. Okay, to find out the value of p0, so put y is equal to 0 in the given polynomial py, right? So what we get, so y को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं? 0 से रिप्लेस करेंगे, राइट? सो p0 इज इक्वल टू, y के प्लेस पर हमें 0 राइट करना है, सो 0 स्क्वायर माइनस y मीन्स माइनस 0 प्लस 1. ओके, इट मीन्स 0 is 0 square is 0, 0 minus 0 will give you 0 plus 1, right? So यहाँ से हमें p0 की वैल्यू मिल जाएगी, p0 is 1, right? It means the value of polynomial py at y is equal to 0 is 1, right? ये इसका मीनिंग होता है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट p1, राइट? हमने p0 फाइंड आउट कर लिया, अभी हम फाइंड आउट करेंगे p1. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट p1. p1 मींस value of polynomial py at y is equal to 1, right? Again, put y is equal to 1 in the given polynomial py. So इस polynomial में हम क्या करेंगे, y के प्लेस को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, right? So we'll get p1 is equal to y square means 1 का स्क्वायर माइनस, एट द प्लेस ऑफ y हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं? 1 से रिप्लेस करेंगे, प्लस 1, राइट? सो लेट्स सी हियर, 1 square means 1, 1 plus 1 will give you 2, and 2 minus 1, 2 minus 1 will give you 1, right? It means value of polynomial py at y is equal to 1 is 1, right? So ये हमारा वैल्यू हो गया p1 का. अभी हम फाइंड आउट करेंगे p2 की वैल्यू, राइट? बिकॉज हमने इस क्वेश्चन में हमसे p2 की भी वैल्यू भी क्वेश्चन में पूछा गया, राइट? फॉर p2 हम क्या करेंगे, y को 2 से रिप्लेस करेंगे. सो अगेन पुट y is equal to 2 in the given polynomial. It means we have to find the value of p2, right? सो p2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, y के प्लेस पर हम 2 राइट करेंगे. सो y स्क्वायर विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस, y को हम 2 से रिप्लेस करेंगे, -2 प्लस 1, राइट? So 2 square means 2 multiplied by 2, it will give you 4. So 4 minus 2 plus 1, right? It will give you 4 plus 1, 5. 5 minus 2 will give you 3, right? It means the value of polynomial py at y is equal to 2 is 3. Okay, so this is the solution of this question.